वन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इन 1881 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ, ब्रिटिश के जो इकोनॉमिस्ट है एजवर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाउंडेड, मतलब कि सबसे पहले वो अपना बुक में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एनालिसिस को फाउंड आउट किए थे in his book Mathematical Physics. Then the concept was further developed in 1906 और फिर वो दोबारा डेवलप हुआ 1906 में by Italian economist Pareto, in 1913 by British economist W.F. Johnson. The credit of rendering the analysis as an important tool of theory of demand after 1934 goes to Hicks and Allen. और फिर जो इसको इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड का एक क्रेडिट मिल गया हिक्स एंड एलन को 1934 में 1934 में Indifference curve analysis. The effects of utility concept have led to the formulation of a demand theory based on consumer preference. This analysis is known as the ordinal utility analysis. This analysis eliminates the necessity of measuring utility and the principle of diminishing marginal utility. Assumptions of indifference curve. Now we have to cover रेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है? रेशनल बिहेवियर है। इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर बिहेव रैशनली। फुल नॉलेज, सेकेंड पॉइंट। द कंज्यूमर इज अज्यूम टू पॉजेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तीसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। देन नेक्स्ट, स्केल ऑफ प्रीफरेंस. Another assumption of the analysis is that the consumer is able to arrange the available combination of goods according to the preference or indifference for them. The next, diminishing marginal rate of substitution. It means as the stock of a commodity increases with the consumer, he substitutes it for the other commodity at a diminishing rate. Consistency in selection. There is consistency in consumer behavior. It means that if at any given time a consumer prefers A to B combination, then at another time he not prefer B to A combination. Then next, transitivity. The analysis assumes transitivity with regard to indifference and preferred. Preferred, it means that if a consumer prefers A combination to B combination and B combination to C, then he will definitely prefer A combination to C. Non-satiety. The consumer does not reach the level of satiety. Consumer कभी satiety का level तक नहीं पहुंच पाएगा. Consumer always prefers more quantity of a good to less quantity. Meaning of indifference curve. Indifference curve technique has been developed on the basis of ordinalism of the utility concept. The concept of indifference curve has been defined as by eminent economist as under Hicks. It is the locus of the Hicks बोले कि ये locus है या main point है जो कि represent करता है parts of quantities between which the individual is indifferent. मतलब जिसमें इंडिविजुअल इंडिफरेंट होता है एंड सो इट इज़ टर्म्ड एज एन इंडिफरेंस कर्व. देन फर्गुसन. ऑन इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ईच ऑफ विच एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. देन नेक्स्ट इज लेफ्ट विच. ये बोले कि अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x and y that gives equal satisfaction to consumer. Then we have indifference schedule combination A B C D E. X goods 1 2 3 4 5 plus सबका साइन प्लस. Y goods का 20 16 13 11 10. और फिर indifference curve
ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट डेली, इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है इंडिफरेंस कर्व। और ये हो गया इंडिफरेंस मैथ। The marginal rate of substitution of x for y is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction. MRS of xy is equal to loss of y by receipt of x is equal to delta y by delta x। ठीक है, प्रॉपर्टीज अब हम लोग देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का। ऑल पॉइंट्स ऑन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट इक्वल यूटिलिटी एल्डिंग कॉम्बिनेशन। A higher indifference curve represent a higher level of satisfaction. Indifference curve slope downward from left to right and indifference curve will never intersect. Indifference curve are convex to the origin. Indifference curve may not be parallel. According to indifference curve analysis, a consumer is said to be in a equilibrium at the point। मतलब कि कंज्यूमर को तब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बोला जाएगा जब प्राइस लाइन और बजट लाइन टच करेगा पार्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व को। प्राइस लाइन और बजट लाइन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं। टोटल आउटले कर्व और लाइन ऑफ अटेनेबल combination या opportunity line। According to Professor Hibdon, the budget line shows all the different combination of the two commodities। budget line show करता है that a consumer can purchase given his money income and the price of two commodities। Conditions of equilibrium, MRS of xy is equal to price of y by price of x by y। Price line should be tangent to indifference curve। Indifference curve should be convex to the origin। Then we have two condition, first order condition and second order condition। First order condition, the price line is tangent to the highest attainable indifference curve। Or second order condition, the indifference curve is convex to the origin, the marginal rate of substitution is diminishing। Thus Hicks in the ordinal utility approach has substituted the term marginal rate of substitution between goods in the place of the ratio of marginal utility of the two goods।